ग्रेविटेशन लिखो, क्या बोलो? सिमिलरिटी फार्मूला हाँ हो गया था, ओके ओके हो गया था, नेक्स्ट सिमिलरिटी चैप्टर, ओके फार्मूला ओके बताया। हो गया था, ओके नेक्स्ट लिखो, ग्रेविटेशन नेक्स्ट चैप्टर, ग्रेविटेशन, व्हाट इज दैट ग्रेविटेशन, लिखो, gravitation, how many planets are there, how many, next chapter write down gravitation, how many planets are there, 8 planets are there, 8 planets are there, and how the planets are evolving, that is given by Kepler, write down Kepler's laws of planetary motion, write down Kepler's laws of planetary motion, Kepler's laws of planetary motion, planetary motion, write down Kepler's laws of planetary motion. वाह, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉ है केप्लर्स का, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज केप्लर्स फर्स्ट लॉ, राइट डाउन केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट, और लॉ ऑफ ऑर्बिट, केप्लर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट, राइट डाउन केप्लर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट, व्हाट इज दैट, लेट्स सी दिस, लिख रहे हो ना, हेलो, अरे लिख रहे हो, यस सर। ओके लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, पहले लिखो उसके बाद समझा दूंगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट planets are revolving around the sun in an elliptical path, planets are revolving around the sun in an elliptical path, planets are revolving around the sun in an elliptical path, and sun is situated at one of its foci, and sun is situated at one of its foci, focus का plural है foci, and sun is situated at one of its foci. What do you mean by this? Let's see this. Ellipse मैंने बताया था जब इक्वेशन में मैथमेटिकल डिडक्शन किए थे हम लोग, तो दिस इज सर व्हाट पोसाई एलिप्स, क्या है? हेलो बोलो, हेलो, यस सर, सर पोसाई क्या है आपने जो फोसाई बोला? फोकस, वन फोकस ऑफ का इट। प्लूरल, फोसाई फोकस का प्लूरल है फोसाई, FOCI, अरे फोकस सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, फोसाई इज अ प्लूरल वर्ड, दो फोकस है इसलिए फोसाई। देखो एलिप्स हैज टू फोकस, एलिप्स हैज टू फोकस, यहीं पे ये कर्व के लिए एक फोकस आएगा, यहीं पे एक फोकस आएगा, एंड ये कर्व के लिए, ये कर्व के लिए दूसरा फोकस आएगा F2, ellipse has two focus, understand this, the planets are revolving around the sun in an elliptical path, and sun is situated at one of its foci, मतलब sun इधर यहीं पे रहेगा या फिर यहीं पे रहेगा, मतलब sun also moving from one focus to another, the planets are revolving in an elliptical path and sun is moving from one focus to another, understand this, तो ellipse has two radius, देखो बताया था यहीं पे जब व्हाट प्रोजेक्टल मोशन पढ़ाया था, व्हाट टू रेडियस है यहीं पे, देखो टू एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, एंड दिस इज व्हाट सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज व्हाट सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज व्हाट सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, एंड ये है सेमी माइनर एक्सिस, दिस इज व्हाट सेमी व्हाट माइनर सर एक्सिस। थोड़ा फिर से, सर हाँ थोड़ा बोलो, फिर से, सर थोड़ा देखो फिर से हाँ जो बता रहा डायग्राम हूँ बनाए। बता रहा हूँ, देखो ellipses टू एक्सिस, ellipses टू एक्सिस, ellipses टू एक्सिस, one axis is major axis, another axis is minor axis, the half is known as semi major axis and this half is known as semi minor axis, अरे समझ में है कि नहीं, तो रेडियस ऑफ द एलिप्स मतलब बेसिकली सेमी मेजर एक्सिस को ही समझेंगे, रेडियस ऑफ द एलिप्स मतलब सेमी मेजर एक्सिस को इंडिकेट करता है, समझ में है, तो व्हाट इज दिस लॉ, दिस लॉ देखो फिर से बोल रहा हूँ, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट planets are revolving around the sun in an elliptical path and sun is situated at one of its foci, means either sun is what on this focus or the sun is along on this focus, means sun is also moving from one focus to another and the planets are revolving in an elliptical path, planets are revolving in an elliptical path, अरे समझ में है, हेलो, अरे समझ में है ना, सर एलिप्टिकल का मतलब क्या है? अरे एलिप्स है,
एलिप्स है, सर्कल जैसे मैथ्स में पढ़े हो, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये एलिप्स है। अरे समझ में है कि नहीं? ये एलिप्स है, यस सर, ये तो ओवल था। ओवल, ओवल इज नोन एज एलिप्स, अंडरस्टैंड दिस। तो ओके सर। सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। देखो दो फोकस है एलिप्स का, फोकस नंबर 1 एंड फोकस नंबर व्हाट इज दैट 2। फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2, दो फोकस है, F1 एंड F2, अंडरस्टैंड दिस। हो गया? देखो डायग्राम ड्रॉ करो। P is the planet, S is the sun. Sun is what? Moving from one focus to another. Is that clear? इसमें लिखो ये semi major axis, write down this is what? Semi major axis, semi major axis, and this is what? Semi minor axis. Write down semi minor axis. This is what? Semi minor axis. Understand this? Semi major axis and semi minor axis. Is it clear or not? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, this is what first law. Second law, write down Kepler's number 2. Second law, लिखो Kepler's second law, Kepler's second law, or law of area velocity, or law of area velocity. Area velocity means area by time. Velocity मतलब distance by time. Area velocity means area by time. Understand this? Kepler's second law or law of area velocity. Is it clear? Kepler's second law or what? Kepler's second law or what? Law of area velocity. What is aerial velocity? लिखो this law states that, write down, this law states that, हेलो अरे लिख रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. लिखो this law states that the planets are revolving around the sun in such a way that, this law states that the planets are revolving around the sun in such a way that, in such a way that their area velocity, their area velocities always remains constant. Their area velocities always remains constant. Area velocity always remains constant. That is they sweep equal area, that is they sweep equal area in equal interval of time. That is they sweep equal area in equal interval of time. Equal interval of time. That is they sweep equal area in equal interval of time. Understand this? What do you mean by this? Let's see this. Kepler's second law or law of area velocity. What is that? The planets are revolving around the sun in such a way that they sweep equal area in equal interval of time. Understand this? They sweep equal area in equal interval of time. What do you mean by this? Let's see this. देखो तो ये एक ellipse है. The planets are revolving around the sun in an elliptical path. Think that the sun is here, this is the sun here, and a planet is moving, planet of mass mp or m is moving from position A to B, position A position to B position through x. Now what is area swept by the planet? Area swept by the planet is this much. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Understand this. In time t second, the area swept by the planet is this much. अरे समझ में आ रहा है आयुष? हेलो सर हाँ थोड़ा अर्पिता फिर बोलो बोलो. सर मेरा नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, मुझे कुछ बिल- सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है, तुम क्लास मत करो, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तुमको, होगा कि नहीं? ठीक है सर। हाँ हाँ सर। रिकॉर्डिंग पूरा हाँ भेज दूंगा, उसके बाद नोट डिक्टेट भी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, आराम से लिख ठीक पाओगे. है सर, मैं लिख लूंगी। हाँ सर। ओके, हाँ अरे हाँ डिक्टेट करूंगा नोट्स, वह आज ही भेज दूंगा. वाह, देखो हाँ सर। तो व्हाट इज दैट हियर? व्हाट इज दैट? लेट द प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी through x. Understand this?
let t is the time taken by the planet to cover from A to B. A to B जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है. अरे t टाइम लग रहा है ना? t टाइम लग रहा है. Yes, So sir. what is that? A to B जाने के लिए t टाइम लग रहा है. The area swept by the planet, what is that? From A to B is what? A x B s, ये एरिया आ रहा है. अगर प्लैनेट कहीं पे भी हो, सपोज ए से रिवॉल्व होके प्लैनेट यहीं पे आ गया, तो उतना टी टाइम में उतना ही एरिया स्वीप करना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट हैज टू स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड दिस? तो अगर प्लैनेट यहीं पे रहेगा तो उतना टाइम में उतना एरिया ही स्वीप करेगा, उतना एरिया स्वीप करेगा. दैट मीन्स व्हाट? if you'll join these points, if you'll join these points, definitely this area will be equal to this area. अरे समझ में? अभी प्लैनेट C Sir. to D जाने के लिए, C to D जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये टाइम भी t टाइम ही लगेगा उसको. ये A to B जाने के लिए जितना टाइम लगा, C to D जाने के लिए भी उतना टाइम लगेगा. अरे समझ में है कि नहीं? Therefore, what? Area covered by the planet A to B is same as area covered by the planet C to D. Therefore, their area velocity will be same. मतलब area by time will be same. Constant. एरिया तो सेम है, टाइम तो सेम है, एरिया बाई टाइम सेम होगा. दैट इज नोन एज एरियल वेलोसिटी. अरे समझ में आ रहा है? हेलो, Sir. Yes, sir. एरियल वेलोसिटी समझ में आयुष? हेलो, सर यस. ओके. डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो. So this is what, according to this law, area of what is that? AX BSA is equal area of CY DSC. अगर टाइम डिवाइड करूंगा, टाइम दोनों में डिवाइड करूंगा, तो एरियल वेलोसिटी सेम. दैट मीन्स एरिया वेलोसिटी विल बी व्हाट? सेम. मीन्स कांस्टेंट है. Hmm. Area velocity is constant. This is what? Second law. Area velocity remains constant. This is what Kepler's second law. This is what Kepler's second law. Is it clear? Kepler's second law. Understand this? Very very important. Yes, लिखो sir. इसको, Yes, लिखो. sir. Sir, इसको ड्रॉ भी कर दें. हाँ, ड्रॉ कर लो, डायग्राम भी ड्रॉ कर लो. Draw the diagram. Let's prove this law. Derivation of this one. Let's see this. Derivation of this law. डेरिवेशन कैसे करेंगे? देखो, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट प्रूव करेंगे. सपोज सन इज हियर एंड द प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम A to B, स्मॉल डिस्टेंस मूविंग फ्रॉम A to B. वाह, लेट ज्वाइन करो इसको B के साथ, इसको ज्वाइन करो A के साथ. लेट R इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस एंड del S इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B. A to B, del S is the small displacement. ठीक है ना? अरे planet is moving from A to B. A to B movement कर रहा है planet. Is that clear? A to B movement कर रहा है planet. Let del S is a small displacement in time del t. Del S is a small displacement in time del t. And this is the area swept by the planet. ये एक triangle होगा, ये एक triangle होगा, ABS triangle होगा जिसका height r है. समझ में? Draw the figure. Draw the figure. Draw the figure. Completed. अरे फिगर हो गया? Yes, sir. हो गया. हो गया आयुष? Completed the figure. आपका सर आवाज कट रहा है. अरे फिगर हो गया? हेलो, यस सर. यस अभी सर. अभी सही हुआ? ओके, लिखो. नाउ लेट ए प्लैनेट ऑफ मास m, राइट डाउन. लेट ए प्लैनेट ऑफ मास m, स्मॉल m, is revolving around the sun, is revolving around the sun
let del s be the small displacement. Let del s be the small displacement in time del t. Let del s be the small displacement in time del t. Del t. Then area of ABSA, area of ABSA कितना होगा? एरिया ऑफ ABSA कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आर. तो मेरा हाफ इंटू AB इज व्हाट? AB in डेल एस. AB इज योर डेल एस इंटू आर. del S. हाफ इंटू डेल एस इंटू आर. हम्म. हो गया? अरे समझ में है? समझ में है सभी को? हेलो. Yes sir, yes sir. नाउ. अरे आयुष लिख दिया? हेलो. अरे आयुष लिख दिया? Yes, sir. Okay, now area velocity is what? Area by time. Write down. Area velocity is equal what? Area of ABSA divided by time. Time is what? Del T. Area is what? Half into del S into R by del T. Del S by del T is what? अरे del S by del T कितना है? B है. तो लिखो. लिख दिया? B. लिख दिया ना? Okay. Now write down. Area velocity is equal. सर 2 मिनट सर लास्ट लाइन तो लिखा नहीं Okay. Okay. लिखो. ठीक ठाक लिखो. सही ढंग से लिखो. नहीं सर लास्ट लाइन हाँ यस सर. हो गया? लिख दिया? आयुष completed. हेलो. तो Yes, sir. एरिया वेलोसिटी इज हाफ इंटू डेल एस इंटू सर वो आर. del S into R है ना? डेल एस इंटू आर है. यस. डेल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट मेरा आर है. अरे ये जो लिखा था मैंने हाफ इंटू डेल एस इंटू आर, इसको जो लिखा था इसी को यहीं पे डाल दिया. हुआ कि नहीं? अरे इसको यहीं पे लिख दिया. अंडरस्टैंड sir. दिस? नाउ यस सर ठीक. एरिया वेलोसिटी कितना हुआ? यस सर. एरिया वेलोसिटी इज योर हाफ इंटू डेल एस बाई डेल टी. कितना है? अरे डेल एस बाई डेल टी कितना है? v है. अरे डेल एस बाई डेल टी इज योर v इंटू क्या है? r. अंडरस्टैंड दिस? हाफ b इंटू r बिकॉज योर डेल एस बाई डेल टी. डेल एस बाई डेल टी कितना होगा? v होगा. अरे डेल एस बाई डेल टी कितना होगा? v होगा ना? इज इट क्लियर नॉट? B. यस सर. हाफ into V into R. इंटू आर. तो यहीं पे एक मास मल्टीप्लाई करूंगा, एक मास डिवाइड करूंगा. तो व्हाट विल गेट हियर? दिस इज व्हाट हाफ सर इनटू मास मतलब मास ऑफ प्लैनेट की. मास ऑफ द प्लैनेट है. m इज द मास ऑफ द प्लैनेट. एक मास मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक डिवाइड करूंगा. ओके. मींस हाफ mvr by ma. अंडरस्टैंड दिस? तो एरिया वेलोसिटी इज हाफ mvr. mvr इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम. अरे mvr इज एंगुलर Momentum, मोमेंटम. लिखो. where L is the angular momentum. L is the angular momentum of the body. Half into L into m. Angular momentum. L is the angular momentum of the body. Half into what? Half into L by m. That is what the angular momentum of the body. Understand this? अरे समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. आयुष लिख रहे हो? हेलो. Yes, sir. ओके. समझ में आ रहा है? ये डाउट है? Yes, समझ में आ रहा sir. है? ओके. देखो. As the planet is moving, our planets are moving in an isolated manner. Isolated means what? No torque is applied on it. No torque is applied. Therefore, what? L is constant, m is constant, 2 is constant. मतलब एरिया हाफ constant. 1. देखो. वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा. सब कांस्टेंट है. L कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है. लिखो. As the planets are evolving, as the planets are evolving in an isolated manner, as the planets are evolving in an isolated manner, therefore L constant, therefore
L constant. Therefore, L constant. As m is constant, therefore area velocity is constant. Area velocity is constant. Understand this? The planets are evolving in an isolated Yes, sir. manner. Isolated means what? No external force is applied No और no torque. torque is applied. Torque is zero. Torque. जब torque zero होगा, L constant है, प्रूव किए थे हम लोग. अरे जब torque zero है, L constant है, angular momentum constant हम लोग प्रूव किए थे. Understand this? Yes, sir. Yes. Therefore, area velocity is constant. This follows second law. Write down. This follows. Write down. This follows Kepler's second law. This follows Kepler's second law. This follows Kepler's second law. हो गया? लिख दिए सभी? Yes, sir. हो गया. Next, third, Kepler's third law. Write down. Kepler's third law. Kepler's third law, or law of time period. Or law of time period. Kepler's third law or law of time period. What is that? देखो. This law states that Kepler's third law or law of time period. This law states that. सर 1 मिनट थोड़ा लिख रहा हूँ सर, 1 मिनट सर, Okay. ऊपर वाला. Kepler's third law or law of time period. Write down. This law states that the planets are revolving. This law states that the planets are revolving around the sun in such a way that planets are revolving around the sun in such a way that square of their time period is directly proportional to cube of their radius. Square of that time period is directly proportional to cube of their radius. Cube of their radius. Radius means semi-major axis. Cube of their radius. That means what? T square is directly proportional to R cube. R is the radius. Square of the time period is directly proportional to cube of their radius. Understand this? T square is directly proportional to R cube. Or we can say here, this implies T square by R cube is constant. T square by R cube is a constant. T square by R cube is a constant here. Understand this? Constant. हो गया? लिखो, एक प्रॉब्लम लिखो उसी के ऊपर. सर 1 मिनट सर लिख रहा हूँ. 1 मिनट. ओके, लिखो आराम से लिखो. रेड में प्रॉब्लम. लिख दिया? अरे लिख दिया ना? Yes sir. Okay, question लिखो. The question is, find out the time period of a planet. Find out the time period of the planet whose radius is 2 times that of radius of Earth. Whose radius is 2 times that of radius of Earth. अरे समझ में आया? Let Yes, sir, RE yes. is the radius. R is the radius of Earth. Planet radius is 2 Yes, times sir. the radius of Earth. Time period of the Earth is 1 year. Time period of the planet you have to calculate. According to the formula, T square by R cube is a constant. अरे constant ना?
टी स्क्वायर मतलब अर्थ का लो, टी स्क्वायर Sir. बाय Yes. आर ई क्यू इज इक्वल प्लानेट का टीपी स्क्वायर सर बाय आप आर जो पी लिख क्यू। रहे हैं वो दिख अंडरस्टैंड क्यों दिस? नहीं रहा है इफ हाँ बोलो, सर? हेलो, अरे सर बोल, अभी दिख रहा है, सर अभी दिख रहा है। वाह, सर तब दिख नहीं रहा था मुझे, आप जो अच्छा लिख रहे थे पूरा ब्लैक दिख रहा था। अच्छा, अरे तुम्हारा अभी नेटवर्क अभी प्रॉब्लम दिखा, है। जूम करने से दिखा। ओके देखो, टी इज व्हाट, टाइम पीरियड इज 1 ईयर। अरे तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है काफी। आर ई क्यू मीन्स आर क्यू, अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज व्हाट टीपी स्क्वायर कैलकुलेट करना है मुझे, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। आर पी स्क्वायर इज व्हाट, 2 आर का होल क्यूब, एंड दिस इज व्हाट 1 बाय आर क्यूब, 8 R that cube is हो what, जाएगा। yes, TP square by 8 RQ getting cancels out. ये So तो we are कैंसिल हो going to जाएगा। get, yes, we are going to get TP square is equal 8. तो हो गया कि नहीं? TP is a E is square root equal to of 8. root मतलब 8 हो जाएगा। 2 root 2 हम्म, year, 2 root 2 year 2 है, root 2 years। years. R का time period है 1 year, and what? Time period of the what? Time period of the planet is 2 root 2 years है. Understand this? 2 root 2 years is the time period of the Yes planet. sir। Understand this? अरे समझ में आया आयुष? सर कैसे अभी करना कट है? गया था आपका पूरा, अभी अच्छा आया, अभी फिर से आया। अच्छा, क्लियर आया, वेरी गुड। अरे तुम्हारा नेटवर्क वहाँ सर पे अप लिख डाउन रहा हो हूँ, रहा लिख रहा हूँ, है। ओके एक लिखो मिनट लिखो, सर, आराम थोड़ा से लिखो। ब्लैक हो जा रहा था। अच्छा आराम से लिखो, लिखो आराम से। समझ में है? अरे समझ में है कि नहीं प्रॉब्लम? दिस इज व्हाट अबाउट व्हाट केप्लर्स थर्ड लॉ एंड केप्लर्स लॉज। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखो, इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Newton's law of gravitation, or universal law of gravitation, or universal law of gravitation, universal law of what? Gravitation, Newton's law of gravitation or universal law of gravitation. It's a universe, everybody in the universe attract each other, that is what? Gravitational force. Clear? Very important law. Likho, what is that law? This law states that, सर पीछे आ गया, क्या हुआ? सर आ गया, आ गया, एक मिनट। देखो, this law नहीं states सर, that, पीछे चला गया था पेज। okay, this law states that, सर थोड़ा थोड़ा ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, थोड़ा पीछे चला गया था आपका पेज। अच्छा ये ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखो। अरे लिखा ना? हेलो, लिखो। सर 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखो। दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, this law states that the gravitational force between two bodies, this law states that the gravitational force between two bodies is directly proportional to, gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to, the square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them means what? Suppose two bodies are taken here, two bodies are taken, two bodies having masses m1 and m2. The distance is always calculated from center to center. Center to center, distance matlab center of mass है, center of mass लोगे. R is the distance of separation between them. Let's two bodies having masses m1 and m2. These are the two bodies. R is the distance of separation between them. Then according to this law,
The gravitational force between two masses is directly proportional to the product of their masses, m1 into m2, product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. समझ में आया लॉ क्या है? अरे लॉ समझ में है? Yes, sir. So gravitational Yes, force sir. is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Is that clear? अरे आयुष समझ में आ रहा है? हेलो, अरे आयुष समझ में आया? हेलो, Yes, yes, ओके. yes, sir. कंबाइनिंगली अगर ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर आएगा. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा एक कांस्टेंट आएगा. दैट कांस्टेंट इज g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, where g is the gravitational constant or universal gravitational constant. G is known as gravitational constant or universal gravitational constant. Gravitational constant, its value is 6.6 into 10 to the power minus 11 ये 11 Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. G is constant. That is 6.6 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Understand this? सर समझ एक में आया? बार थोड़ा जो F is directly proportional to ये थोड़ा एक बार देखो और एक बार हमारा लॉ के आंसर क्या होगा? F is F- directly proportional to the product of masses of the two bodies. सर वो समझ में है सर, उसके बाद तो ये दोनों को कंबाइन करो. अगर ये दोनों को कंबाइन कर रहे हो m1 m2 by r square आ रहा है. F equal to सर one हम constant you are कांस्टेंट getting, को that is g ग्रेविटेशन m1 क्यों m2 लिया by r square है. वाह. सर सर हम तो कांस्टेंट को उसके बिना इक्वल टू नहीं आ सकता है. यस, अगर एक कांस्टेंट के बिना प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज जी हियर. अरे समझ में आ रहा है? अरे सर प्रोपोर्शनलिटी क्यों कांस्टेंट, के क्यों नहीं लेंगे अरे यहाँ पे k जो है एक्सपेरिमेंटली g लिखा गया है. k को एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर दिए, हुआ कि नहीं? k को एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर, सर k का वैल्यू g है. ऐसे कैसे हुआ? k इज सर एक्सपेरिमेंटली कैसे फाउंड एंड दैट इज सर ऑलवेज वो g. तो प्रूफ में होगा ना क्या? हेलो, अरे क्या हुआ बोलो? सर वो तो प्रूफ उसका भी होगा इसका सर प्रूफ नहीं उसका है, प्रूफ उसका भी तो प्रूफ होगा नहीं है, उसका प्रूफ कोर्स में नहीं है. वाह, उसका प्रूफ कोर्स में नहीं है. Yes, अंडरस्टैंड दिस? So g is constant, that is 6.6 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Is that clear? अरे समझ में आया? सर 10 to the power minus 18 नो Minus 11, 10 to the power minus 11, 11 है. सर 11 है, 11. अरे 6.6 into 10 to the power Yes, sir. minus 11 है. 10 to the power minus 11 है. उसका Understand? यूनिट यूनिट क्या है लिखना है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर ओके सर पर केजी स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर. हो गया? पैकेज यस हो गया? नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट? यस सर ओके, प्रॉब्लम में करेंगे इसका क्वेश्चन. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. फाइंड आउट, लिखो, फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 kg and 4 kg separated by 2 meter apart. ऐसे इसका क्वेश्चन आंसर लिखो. फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 kg and 4 kg separated by 2 meter apart from each other. Separated by 2 meter apart from each other. You are going to get, देखो सीधा फॉर्मूला डालेंगे. यहाँ पे m1 is 2 kg, m2 is what 4 kg and distance is 2 meter. तो फॉर्मूला क्या है? F equal to G m1 m2 by r square. G is 6.6 into 10 to the power minus 11. m1 is 2 into 4 divided by r square is 2 square. Getting cancels out. This is what 13.2 into 10 to the power minus 11 Newton है gravitational force. Gravitational force is 13.2 into 10 20 to the कहाँ power से minus 11 Newton है. हो गया? अरे 20 कहाँ माइनस है? समझ में आया यूज?
हेलो। नहीं सर, मैं भी 13.2 ही निकाला था। अच्छा, अरे आयु समझ में आ रहा है? उसका 20 कैसे आ गया है उसका? हेलो, सर मेरा तो 20 आया था 20 कहाँ आ गया? आर अरे जी तो तुम्हारा 6.6 इंटू 10⁻11 है, 2 स्क्वायर 4 कैंसिल हो रहा है, 20 कहाँ आ गया? अरे समझ में है? 4 into 2 है ना, 4 into 2 तो 8 हो गया, 8 8 हो नीचे गया, बाई 2 हो 4 गया। है, नीचे ओके बाई सर। 4 है, तो 2 इंटू सर 6.6। सर जी को मैंने, सर गलती से मैंने 10 ले लिया अरे था 10 सॉरी कैसा है? ये जी सर। डिफरेंट है, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अरे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एग्जाम में पूछेगा। समझ में है? सर मैंने 10 ले लिया था। हाँ 10 ले लिया इसलिए गलत है। यस वाह। और एक क्वेश्चन लिखो, यस राइट डाउन, फाइंड सर, आउट क्या द डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है। अरे जी एंड जी के बीच में डिफरेंस क्या है बोलो, लिखो, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, लिखो। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यस, यूनिवर्सल लिखो, ग्रेविटेशनल यस यस, कांस्टेंट है ना। लिखो, स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख लो, स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख रहे हो ना? स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस एंड कैपिटल जी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Small g, it is variable. Small g, it is variable. It is variable. Capital G, it is universally constant. फिक्स्ड कॉन्फिक्स। It is universally constant. Universally constant. Third, its value is 9.8 meter per second square. Its value is, g का वैल्यू कितना है? 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 11 न्यूटन केजी स्क्वायर। अरे समझ में है? स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। अरे समझ में है? यस सर। हेलो, यस सर। ओके, सर वो जो नेक्स्ट। स्मॉल जी और कैपिटल जी का भी एक फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला क्या था? स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों लेके फार्मूला नहीं है, अरे फॉर्मूला था कांस्टेंट है, फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्या है? अरे जी एंड सर। जी एक को डिफाइन कर फॉर्मूला रहे हैं। था जिसमें स्मॉल जी और कैपिटल जी भी था एक नहीं, फॉर्मूला में, स्मॉल जी कैपिटल जी तो नहीं 9th है। क्लास में पढ़े थे। हाँ वो आगे आएगा, यस यस आगे आएगा, वेरिएशन ऑफ जी में आगे आएगा, बट इतना ही डिफरेंस है, हो गया? अरे इतना ही डिफरेंस है, अंडरस्टैंड दिस। यस नाउ सर। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, लिखो, क्वेश्चन है, फाइंड आउट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg इन द फॉलोइंग फिगर। फाइंड आउट, लिखो, फाइंड आउट, देखो, फाइंड आउट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg मास इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर क्या है देखो, फिगर है, यहीं पे तुम्हारा 4 kg है, यहीं पे 1 kg है, 1 kg है, यहीं पे 10 kg है, तो ये डिस्टेंस दिया गया 2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस आल्सो गिवन 2 मीटर। फाइंड आउट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg इन द फिगर, निकालो। फाइंड आउट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg। 1 kg के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे कितना है? अगर फिगर में ड्रॉ करो, देखो, देखो, 1 kg के ऊपर फोर्स निकालोगे कितना है? क्विक, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 1 kg। दिस इज व्हाट 4 kg, दिस इज व्हाट 1 kg and this is what 10 kg। What? And we're going to get what? 2 meter। देखो जल्दी, this is what 2 meter। write down quick, आंसर निकालो जल्दी। दिस इज व्हाट 2 मीटर। सर ओके, 2/5। 2/5 नहीं, गलत कर रहे हो। अरे जी को 10 मत लो, जी इज व्हाट
6.6 into 10 to the power minus नो सर 11. मैंने डिवाइड सर इसका कैसे निकालेंगे? मैंने 2 का निकाल दिया और डिवाइड कर दिया एक के डिवाइड साथ कैसे होगा? नेट फोर्स Net- ऑन 1 kg, नेट फोर्स ऑन 1 kg निकालोगे। हुआ? देखो हाउ टू वर्क आउट। Force on 1 kg due to 4 kg is what is the direction here? Force on 1 kg due to 10 kg किस तरफ होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। अरे इस साइड अट्रैक्टिव होगा कि नहीं? देखो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा ऐसे। अरे 1 kg को 4 kg खींचेगा, किस तरफ खींचेगा? खींचेगा इस तरफ खींचेगा। दिस इज व्हाट फोर्स ऑन 1 kg लेफ्ट की due to 4 तरफ, हाँ। kg, लेफ्ट की तरफ खींचेगा उसको। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 10 kg किस तरफ खींचेगा इसको? अरे किस तरफ खींचेगा? इस तरफ, 10 kg की तरफ, राइट की तरफ। राइट की तरफ खींचेगा। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? अरे समझ में आ रहा है? फोर्स यस ऑन, सर, फोर्स ऑन व्हाट? फोर्स ऑन 1 यस kg सर। ड्यू टू 4 kg इस तरफ जा रहा है। फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 10 kg इस तरफ जा रहा है, ब्लू की तरफ जा रहा है। अंडरस्टैंड दिस? एंड प्योरली वेक्टर है। वेक्टर में हम लोग पढ़े थे। सर क्या बोलो? सर सर मैंने वाईफाई मैंने अभी कनेक्ट किया। मेरा आपका जो कट के आ रहा था, थोड़ा और एक बार थोड़ा समझा दीजिए ये देखो जो डायग्राम। तो फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 4 kg मैंने अभी दैट इज वाईफाई व्हाट? टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 4 kg टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 10 kg टुवर्ड्स राइट जाएगा। अरे अंडरस्टैंड दिस और नॉट? फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 4 kg टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा एंड फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 4 kg टुवर्ड्स राइट जाएगा। जो लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं आई कैप, जो राइट जा रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं माइनस आई कैप। ऊपर जाएगा तो लिखेंगे प्लस जे कैप, नीचे आएगा तो लिखेंगे माइनस जे कैप, है कि नहीं वेक्टर में? अरे समझ में है कि नहीं? वेक्टर में हम यस सर। कैसे डिनोट किए थे? तो ये मेरा फोर्स F1 है, ये मेरा फोर्स F2 है। दिस इज व्हाट माय F2। F2। अंडरस्टैंड दिस? नाउ F1 कितना है बोलो? दैट फोर्स F1 इज इक्वल G into M1 into M2 by R square 2 square। बाय ये आर क्या है? स्क्वायर। माइनस आई कैप होगा। अरे माइनस आई कैप ना टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो माइनस आई कैप माइनस होगा। आई कैप टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं मतलब माइनस आई कैप। 2 square 4 getting cancels out, so this is what minus g I cap। -6 माइनस g मतलब माइनस 6.6 माइनस into 10 to the 6.6 power into 10 minus to the power 11 -11। 11 आई कैप न्यूटन है। ये मेरा फर्स्ट फोर्स मिला। अरे आइए समझ में आ रहा है? हेलो? ओके अभी सेकंड फोर्स को निकालूंगा। यस सर F2 को निकालूंगा। F2 कितना है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज G, M1 है 10, M2 है 1 बाय व्हाट इज दैट R स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर है। ये प्लस आई कैप है क्योंकि राइट को जा रहा है F2। अरे F2 राइट को जा रहा है इसलिए क्या होगा? दैट इज व्हाट आई कैप होगा। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज व्हाट G इंटू 10 बाई 4 आई कैप। तो G सर मेरा है, आंसर कितना? 9.9 into 10 to the power -11 अरे देखते हैं, निकल रहा हूँ सर। जी, निकल रहा हूँ मैं। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10/4, 10/4 कितना आएगा? अरे 10/2 5 जा 2.5 2, 2.5 और 2, 2.5 दिस मच आई क्या पे। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 में कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 3.3 2 3, 3.3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1 5 16.5 16.5 इंटू 10 टू द into 10 to माइनस 10 11 minus। आई कैप न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या करना है? ऐड करना है दोनों को। तो इन दोनों को F1 ऐड plus कर F2, देंगे। यस ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। लिखो, लिख दिए सभी? हेलो? अरे आयुष लिख दिया ना? यस सर, लिख दें। ओके लिखो नेट फोर्स इज योर Yes, हाउ sir. मच? लिखो नेट फोर्स इज हाउ मच? Net force is your F equal to how much you're getting? F1 plus F2. That is what the net force. My F1 is how much? F1 कितना है? F1 है -6.6 into 10 to the power -11। लिखो this is what -6.6 into 10 to the power -11। ये है प्लस कितना आ रहा है? 16.5 into 10 to the power -11। 16.5 into 10 to the power -11, ये आई कैप है, दोनों आई कैप है। एंड द रिजल्ट इज, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? दिस इज व्हाट 0.9, 9.9 इंटू 10 to the power -11 आई कैप न्यूटन है।
Understand this? This is what the net force. Is that clear? Net force is सर मैंने 9.9. डायरेक्ट सर हाँ बोलो. सर हाँ बोलो बोलो. सर मैंने डायरेक्ट किया ये 6.6 into 10 to the power -11 हाँ होल ब्रैकेट हाँ 10 - 4 हाँ by 4 कॉमन में 4 था ना हाँ. ओके ओके. 4 नो था प्रॉब्लम. नो इसीलिए प्रॉब्लम. 4 और ले हाँ लिया ठीक है. डायरेक्ट सही निकल गया सही है. सही है. वो भी सही है. 9.9 into 10 to the power -11 I cap Newton. Is that clear? I understand this. Understand this? ये सर Hello. This is how we can find out what the gravitational Yes, sir. force here. Understand this? Next, write down. देखो देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. What is that vector form? Let's see this. Vector form of gravitational force. Vector form. Vector form of gravitational force. What is the vector form here? देखो सभी ध्यान से देखो इधर. मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. m1 m2 आर द स्केलर क्वांटिटी. तो F को वेक्टर करना है तो ये डिस्टेंस को मुझे वेक्टर डिस्टेंस को मैं वेक्टर कर सकता हूँ क्योंकि आई कैन ट्रीट द डिस्टेंस एज Yes, पोजीशन sir. वेक्टर. किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूनिट वेक्टर एक मल्टीप्लाई कर लो. मीन्स व्हाट? इफ विल मल्टीप्लाई आर कैप इट विल कन्वर्ट इनटू ए वेक्टर. अंडरस्टैंड दिस? अरे किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करोगे कैसे? ए कैप इज वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मीन्स ए वेक्टर इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप. वो अभी वेक्टर में कन्वर्ट हो गया. अरे समझ में? अभी वो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो Yes, sir. समझ Yes, में आ sir. रहा है? तो F इक्वल टू जी m1 m2 by r square r cap है. This is what the vector form of what? Gravitational force. And it is always attractive in nature, therefore negative sign is written. Negative sign is for attractive in nature. The force is attractive in nature. Write down. Negative sign is for the force is attractive in nature. Negative sign is for the force is attractive in nature. नेगेटिव साइन इज फॉर द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. समझ में आ रहा है? हेलो Yes, sir. नाउ यू सी दिस. इसको अगर सही ढंग से करें F इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. आर कैप इज वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r. तो F इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r क्यू. r वेक्टर होगा. अरे समझ में आया कि नहीं? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. ये लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो. बट प्रॉब्लम में हम लोग आई कैप जे कैप फॉर्मेट में करेंगे. प्रॉब्लम जो किए थे वैसे आई कैप जे कैप फॉर्मेट में करेंगे. अंडरस्टैंड दिस? इसको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ऐसे सर वेक्टर फॉर्म दिखाइए में. सर हेलो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. नेगेटिव साइन इज फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. Understand this? Negative sign is for the gravitational force is always attractive in nature. Understand this? This is what we are going to get. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ. Important है. Now write down characteristics of gravitational force. अरे लिख दिया आयुष? हेलो अरे आयुष लिख दिया? यस सर ओके लिखो. Characteristics of gravitational force. लिखो. Characteristics of write down. Write down characteristics of gravitational force. लिखो characteristics of gravitational force. Characteristics of gravitational force. What are the characteristics? लिखो. First characteristics, it is a fundamental force. अरे 4 फंडामेंटल फोर्स में से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? Write down. It is a fundamental force. It is a fundamental force. Second,
It is the weakest force among all fundamental force. Second, it is the weakest force. It is the weakest force among all the fundamental forces. It is the weakest force among all the fundamental forces. अरे हो गया? Third, Yes, sir, हो गया. third, it is a long range force. Third, it is a long range force. It is a long range force. It is a long range force. Fourth one, it does not depend on the presence of medium in between the masses. It does not depend on the presence of medium in between the masses. It does not depend Sir, on it does not depend on the presence of medium. It does not depend on the presence of medium in between the masses. It does not depend on the presence of medium in between the masses. Number 5, it is a central force. It is a central force. Central force means what? The direction of force is along the line joining the masses. देखो ये जो direction of force है always ये line पे ही रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा. अरे ऐसे नहीं रहेगा direction of force. Impossible. समझ में है कि नहीं? On the line. On the line. Write down. It is a Yes, sir. central force. It is a central force. लिखो that is the direction of force is always along the line joining the masses. That is the direction of force is always along the line joining the masses. Line joining the masses. अरे समझ में है? And Yes, sir. number 6, it obeys inverse square law. क्यों? It is inversely proportional to the square of the distance. Yes. Write down. It obeys inverse square law. Inverse square law. क्यों inverse square law? Because it is inversely proportional to the square of the distance. It obeys inverse square law. It obeys inverse square law. It obeys inverse square law. अरे समझ में है? It obeys inverse square law. Is that clear? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir, समझ गया. It obeys inverse square law. So ये सब है characteristic of gravitational force. Understand this? Next उसी का प्रॉब्लम करेंगे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे. वाह, उसको नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. देखेंगे. वाह, Okay, sir. अरे समझ में है? इसको नेक्स्ट क्लास Yes, में ही sir. देखेंगे.